उजवाड काळोख पैस करता, नव्याची साथ शिकता. प्रसन्न वातावरण मन खोशी करता, मनाक उत्स्फूर्ता जागयता. आयज आमी म्हत्वाच्या सुवाळ्याक हांगा सगळीं जमिल्लीं आसा. ही कार्यावळ यशस्वी जावन वातावरण प्रसन्न करपा खातीर आमी प्रार्थनेंतल्यान सुरवात करुया. मागता सर शरण मडगांवकर हांच्या लागीं की तांणी प्रार्थनेंतल्यान कार्यावळीक सुरवात करची. चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभभयश्यामं पूर्णकामं अत्याभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्. Thank you. देव बरे करूं सर. कार्यावळीची सुरवात प्रसन्न वातावरणात सुरू जाल्ली आसा. कांय म्हत्वाच्या कारणाक लागून आमचे उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्यो प्राचार्या मॅडम सुप्रिया नेत्रावळकर उपस्थित रावंक शकली ना. तरी पूण तांणी आपलो संदेश आनी आशिर्वाद व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केला. तांचो व्हिडिओ आतां आमी तुमच्या मुखार सादर करता. साऊंड A very good morning. We are all gathered here for a beautiful event. It's the felicitation program of the toppers of the students who achieved outstanding results at the Goa Board examination, the HSSC examination of March or April 2022. Dear students, the ART stream has contributed to 100% result, and you have an unmatched record over the last few years of having achieved this kind of a target. We salute you, we acknowledge you, we appreciate you, and at the same time we also would like to motivate you further, not just for a number 100 now, but in terms of more qualitative performance when it comes to number of distinctions. We have toppers, we have Rutvija, we have Dipankar, we have Kajal, we have outstanding results in the form of 100 out of 100 from Kajal in political science, and she will be felicitated very soon by a number of organizations. So you have also proved that you have added to an extremely qualitative performance. In this hall right now we have students of Standard 12th Arts. And dear students, I want you to pay very careful attention to each and every minute of this program. We have the felicities, and we have a large number of them who also achieved a score of 75% and above, which is distinctions. And each of these students are accompanied here by their parents. And dear parents, thank you so much for being
with us here today because we know what the last 2 years were like for you. It had been tremendous pressure. To what extent we could reach out to you, I'm not really sure. But we as teachers tried our level best, and we are extremely grateful and thank you for having supported us for doing our best to the students. I'm saying this with reference to the remedial classes that we had in the afternoon. The students of standard 12 arts used to wait at home or wait back in school and go home very late in the evening just to do work, achieve, study, improve, do some writing work, keep in touch with the teachers, and this self-motivated exercise is the key solution to why this result has been so outstanding. And at this point of time, my hats off to the teachers of the art stream. You have made this result happen. It's not just happened, no doubt with the performance and support of the students and the parents. Dear teachers, you have made this result happen, and no matter what obstacles come your way, I wish you all the very best. I share with you and I support you for whatever endeavors you may have in this regard. Chief guest of this function, ex-Principal Anil Samant. We could have no better personality today to grace this occasion. And Sir, as he was an excellent orator, he has so much work and experience in academics and in molding and addressing students. So, may I sincerely apologize that I could not be present for this function today due to prior commitment elsewhere. But thank you so much for coming, and we sincerely acknowledge your presence on the days this morning. Dear one and all, thank you so much again for sparing me and giving me this opportunity to share my words with you despite my absence. Best wishes to the felicities, best wishes to the parents, the students and the audience. Do pay keen interest to what is happening, and dear teachers, congratulations and prayers to the Almighty to keep up your good work. Thank you. Thank you, ma'am, for your beautiful message. As ma'am has mentioned, we have secured 100% result for the art stream. I request all the audience to congratulate with a round of applause for all the students who have achieved this 100% result. Let us begin with a formal function. May I now request the head of the arts faculty, Ma'am Kirti Saukar, to escort the chief guest, Shri Anil Samant sir, and other dignitaries on the dais. Requesting Sir Gaukar to kindly come forward. Thank you, ma'am. The presence of a true spiritual teacher and inspiring thoughts make our mind peaceful and life joyful. And we are fortunate to have one such personality on the dais, the National and State Teacher Awardee, the chief guest of today's function, Shri Anil Samant sir. May I now request Shri Sarvanand Vede to introduce our chief guest for the day and unfold this great personality to the audience. Can you read that? आदरणीय व्यासपीठ आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे
सामंत सर, कला शाखा प्रमुख कीर्ती मॅडम, विद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक पिसुर्लेकर सर, गावकर सर आणि विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलाही कार्यक्रम असला की त्या कार्यक्रमामध्ये आपण मान्यवरांचा परिचय किंवा मान्यवरांची ओळख करून देतो. पण समाजातील काही असामान्य व्यक्तींना वेगळ्या ओळखीची गरज नसते. त्यांनी समाजासाठी केलेले कार्य हीच त्यांची खरी ओळख असते. त्यातीलच एक आगळे वेगळे व्यक्तिमत्व म्हणजे सामंत सर. सामंत सरांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम केले. शिक्षण, कला, साहित्य, सामाजिक इत्यादी. ज्या ज्या ठिकाणी सरांनी काम केले त्या त्या ठिकाणी एक आदर्श निर्माण केला. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांनी केलेल्या भरीव आणि आदर्श कार्यामुळे 2016 साली गोवा सरकारने त्यांना राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. त्यानंतर 2017 साली भारत सरकारने राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. सामंत सर एक चांगले संगीतकार आहे. सरांनी कितीतरी कवितांना व देशभक्तीपर गीतांना सुंदर अशा चाली दिलेल्या आहेत. सरांनी एकांकिका सुद्धा लिहिलेल्या आहेत. मृत्युमी अमृतम गमय या एकांकिकेला कला अकादमीमध्ये कितीतरी वेळा प्रथम पारितोषिक मिळवण्याचा मान मिळालेला आहे. परत हीच एकांकिका जेव्हा कोकणीमध्ये अनुवादित झाली त्यानंतर सुद्धा तिथे या एकांकिकेला प्रथम येण्याचा मान मिळाला. मराठी भाषा अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही अनेक वर्षे सरांनी काम पाहिले. अखिल भारतीय शिक्षण संस्था असलेली विद्याभारती या संस्थेमध्ये सुद्धा सामंत सरांनी काम केलेले आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व प्राचार्य असताना सामंत सरांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोत्तम कामगिरी केलेली आहे. एक व्यक्ती घडला की कुटुंब घडते, एक कुटुंब घडले की समाज घडतो आणि त्यातूनच राष्ट्राची प्रगती होते. आपल्या प्रबोधनातून अशी अनेक माणसं घडवण्याचे काम सामंत सरांनी केलेलं आहे. सध्या ते गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष आहेत आणि ही जबाबदारी सुद्धा ती यशस्वीपणे सांभाळत आहे. गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर सरांनी एक नवीन मराठी भाषेची चळवळ सुरू केली असे म्हणता येईल. ही चळवळ कोणाच्याही विरोधात नव्हती, तर वेगवेगळ्या स्पर्धा व संमेलनं आयोजित करून तरुण वर्गाला सांस्कृतिक व साहित्य क्षेत्राची गोडी लावण्याची चळवळ होती. सामंत सरांना अनेक पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. राज्य पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या कार्याची दखल घेतली गेली. एवढे असून सुद्धा त्यांना कुठल्याही गोष्टीचा गर्व झालेला त्यांच्या बोलण्यातून, त्यांच्या वागण्यातून कधीही दिसला नाही. यामुळेच त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करणारे असंख्य माणसे आज आपल्याला समाजामध्ये दिसतात. असे हे बहुरंगी अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आज आमच्यामध्ये आहे. एक आदर्श शिक्षक, विद्यार्थीप्रिय शिक्षक, समाजप्रिय शिक्षक, कवी, लेखक, संगीतकार, व्याख्याते व प्रबोधनकार. सर, आज तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल मी तुम्हाला नमस्कार करतो आणि तसेच मनापासून परत एकदा तुमचे स्वागत करतो. धन्यवाद. देव बरे करू सर. फुलां मन प्रसन्न करतात. फुलांचो परिमळ वातावरण सुगंधीत करतात. गिन्यान जिवितांतलो काळो पयस करून जिवीत परजळीत करतात. कार्यावळीक सुरवात जाल्लीच आसा. आतां आमी आमच्या मुखेल सोयऱ्यांक फुलां आनी पुस्तक भेटोवन येवकारतात. मागता आमच्या कला शाखेच्यो मुखेली मॅडम कीर्ती सावकार हांच्या लागीं की ताणें आमच्या मानेस्तांक येवकारचें. Thank you, Ma'am Kirti. We have gathered here for a special occasion. So may I now request our senior most teacher, Sir Lakshman Parabkar, to brief us about the purpose of the program. नमस्कार.
दिनों के बाद, बहुत दिन मतलब 2 सालों के बाद, पता नहीं पहली बार आप इस सुंदर हॉल में उपस्थित होंगे। सो विद्यार्थी, आप सभी का मनस्वी हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा पहला दिन और आप सभी प्रसन्न। आपके पीछे बैठे आपके अनुज भी इसी इंतजार में कि अगला साल यहाँ बैठने का हमारा है। सो अभी पीछे बैठे विद्यार्थी रिजर्व कर लें जगह एक बड़ा उत्सव आर्ट्स शाखा के लिए, और इस पुरुषोत्तम बालावलकर हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्ट्स के विद्यार्थी हम सभी को मनाने का ये अवसर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है विद्यार्थी जब आपके हसीन चेहरे सुंदर हंसते हुए फूलों की तरह जब नजर आते हैं तो मन प्रसन्न होता है। आने वाले ये जो पीछे बैठे हैं आपके साथ, इनको कुछ और नया देने का जोश पैदा होता है। सो धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम क्या है आप सभी जानते हो, लेकिन एक औपचारिकता होती है विद्यार्थी कि क्यों इस प्रकार के आयोजन होते हैं। सो पहले हमने कहा असल में यश आप लोगों ने पाया है, भरपूर मेहनत की है, लेकिन उत्सव हम मना रहे हैं, है ना अनोखी बात। आपको मनाना चाहिए था, लेकिन स्कूल मना रहा है, हम टीचर्स मना रहे हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि ये जो पीछे बैठे हुए आपके भाई बहन बैठे हैं पीछे, इन लोगों को यह स्फूर्ति मिले, एक उत्साह मिले कि ऐसा सुंदर यश यहाँ बेशक पाया जा सकता है, बेशक पाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे सारे टीचर यहाँ बैठे नहीं हैं। सामंत सर जी है जिन्होंने काफ़ी साल हमें मार्गदर्शन किया। और सर, आपने जो बड़ा जहाज छोड़ा था पानी में, भले ही आप इस जहाज पर आज न हो, लेकिन सुंदर ढंग से ये चल रहा है। और हमें बड़ा गर्व है कि जो शिक्षा दीक्षा, जो कुछ संस्कार आपसे इस इंस्टीट्यूशन में चले आए, उसी का पुनर्वहन फिर से चल रहा है। सो आपके आर्ट्स के सारे शिक्षक, बड़ा गर्व महसूस होता है विद्यार्थी जब हम भी यहाँ आए थे। अच्छे साथी शिक्षक मिलना कई बार अच्छा योग नहीं आता, लेकिन इस संस्था में ऐसे शिक्षक आप लोगों को मिले हैं, वाह रे वाह, क्या बात है। सो विद्यार्थी, ऐसे सभी शिक्षकों का भी मान बढ़े, उनके अंदर भी वही चेतना जागे कि आने वाला प्रत्येक स्टूडेंट कुछ देकर चले, यहाँ से चला जाए, कुछ लेकर अपने साथ चला जाए समाज को देने के लिए। और ऐसे ही उद्देश्य रख कर सारी बातें चलती है। लगातार 3 साल हम 100% स्कोर कर चुके, 100% रिजल्ट। ये कोई आसान काम नहीं है, हम कोई ज्ञान वाले नहीं हैं, हमारे पास सब्जेक्टिव काफ़ी मैटर्स होता है। और ये सब कुछ पढ़कर आप जब अच्छे अंक स्कोर करते हो तो मन बात हो उठता है, बड़ा प्रसन्न हो उठता है। 100 में से 100 स्कोर करना मामूली बात नहीं होती। आप नॉलेज सब्जेक्ट में ही कर सकते हो, लेकिन हम जैसे विषयों में जहाँ भरपूर लेखन होता है, भरपूर वाचन होता है, वहाँ 100 में से 100 स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। 100% रिजल्ट लाना भी मुश्किल है, लेकिन आप सभी ने लगातार वो कर दिखाया है। 40, 50, 60 और आज इस साल 75 डिस्टिंक्शंस। जिस कल्पना करो विद्यार्थी। सो जिस कदर आप लोगों ने मेहनत की है, आपके शिक्षकों ने भी मेहनत की है, वह सब कुछ रंग लाया। मुझे याद है कीर्ति टीचर, उसके साथी गीताली, उज्ज्वला जी, सुनंदा जी, ये लोग आप लोगों के लिए खाना पकाते थे। वो रेमेडियल टीचिंग याद करो विद्यार्थी, जो आते थे रेमेडियल के लिए, दुर्भाग्य
मैं वहाँ खाने के लिए भी नहीं था और पकाने के लिए भी नहीं था, लेकिन देख रहा था कि ये लोग क्या मातृत्व लेकर आए। संतान किसकी है? आपके माता पिता आपके घर बैठे हुए हैं और ये लोग आपके खाने की, नाश्ते की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। आपकी हर जिम्मेदारी अपने समझ कर ये काम कर रहे हैं। और यहाँ बैठे पीछे 12वीं के इस साल के विद्यार्थी भी आपसे यही बात हम कहना चाहते हैं। सारस्वत विद्यालय पुरुषोत्तम वालावलकर हायर सेकेंडरी स्कूल में ये सारी व्यवस्था होती है। आप बस किसी और माता पिता के पुत्र या पुत्रियां होकर यहाँ नहीं आए हो, बल्कि जब आप आते हो तो आप हमारे अपने हो और आपके सर्वांगीण विकास के लिए ये संस्था जो भी उचित बनता है हमसे हम करते हैं। और यही उद्देश्य है कि हर आने वाला छात्र यहाँ से कुछ लेकर जाए दुनिया को देने के लिए, और यही हमारी इच्छा ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन होता है। सो आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों से अपने आप एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देव बरे करू सर. विद्यार्थी म्हळ्यार जिती जागती उर्जा, त्या उर्जेक फावो ते मार्गदर्शन मेळूंक जाय. कश्ट केल्यारूच यश मेळटा. आयज आमी हो खोशयेचो सुवाळो मनोवपाक, सत्कार सुवाळो मनोवपाक हांगा जमिल्ली आसा. आनी हें मनोवपा फाटलें कारण म्हळ्यार आमच्या कला शाखेच्या 12वेच्या विद्यार्थ्यांनी खरकश त्रास घेवन अभ्यास करून परीक्षेत जैतिवंत जाला, देखून तांचो भोवमान करप गरजेचो थारता. आतां आमी सत्कार सुवाळ्या कडेन वळटा. फुडलीं सुत्रां हांव टिचर सुनंदा पिंगळे हांच्या लागीं सोंपयतां. Thank you, Teacher Ankita. To be a champion, I think you have to see the big picture. It's not about winning and losing, it's about everyday hard work and about thriving on a challenge. Good day to everyone present. It gives me immense pleasure to introduce you all to our toppers of art stream of HSSC examination 2021-2022. Their outstanding performance has helped us and our institution to accomplish a greater level of success. This year, as you all know, we have 75 distinctions, 68 first classes and just 2 second class. So let us begin. As I call out the names, I request each topper to come forward and climb on the stage from the right hand side of the podium to receive their prize. We will be honoring our toppers with a certificate of appreciation and a memento as a token of love. To begin with, I call upon Master Bhise Nilkant Gavas to come on the stage and receive his certificate and memento. Requesting Teacher Hinda Valdekar to give away the certificates to our students. Bhise is a very sincere and dedicated student. Master Akshay Ramdas Mayekar, requesting our audience to give them a
Next is Master Amol Narendra Valgoikar. Amol has scored 75.1%. Next is Master Rohit Maripagol. Rohit has scored 75.6%. Thank you, Teacher Kunda. Now I request Teacher Sandhya to give away the certificates. Next we have Miss Sia Rajan Naik. Miss Sia has scored 75.8%. Next, we have Master Rahul Rathod. He has scored 76%. Rahul has scored 76%. Requesting our audience to give them a huge round of applause. Next, we have Master Sandeep Navi. Next in line is Miss Simran Virnekar. Master Sandeep has scored 76.1%. Miss Simran Virnekar. Next we have Miss Gayatri Padigar. Thank you, Teacher Sandhya. Now I will request Sanjay to give away the certificates. Miss Gayatri Padigar, she has scored 77%. Miss Gayatri Padigar. Next we have Miss Clappy Sores. Miss Clappy. तसं Miss Clappy has scored 77%. Next is Miss Sakshi Gosavi. तर त्याने Next in line is Miss Kavita Parak. Sakshi has scored 77%. Requesting audience to give them a huge round of applause. Miss Kavita Parak, she has scored 77%. Next in line is Miss Khajida Khan. Miss Khajida has scored 77.3%. Next speaker is Vipasha Pandurang Shirokar. Next we have Master Ravi Shirokar. Vipasha has scored 77.3%. Thank you, Sir Jay. Now I request Teacher Ankita to give away the certificates.
Master Rushikesh Shirodkar. Rushikesh has scored 77.6%. Requesting audience to give them a good round of applause. Next we have Miss Shiny Panjikar. फोटो कटून बोले थे फोटो कटते Shiny has scored 78%. हाँ पहिला मरात किती Next we have Miss Damini Prakash Kawas. Next Miss Viana Yende. Viana has scored 78.6%. ते Thank you, Teacher Ankita. Now I request our senior teacher, Madam Ujwala, to give away the certificates. Next we have Miss Isha Dhargalkar. She has scored 79.16%. Next we have Miss Vaibhavi Vasant Kawas. Miss Isha has scored 79.16%. Miss Vaibhavi Kawas. I think she is not here. Next we have Miss Siddhi Kashinath Narvekar. Siddhi has scored 79.3%. Requesting audience to give them a good round of applause. Next we have Master Swayam Sawant. Next we have Master Somesh Sawant. Thank you, Teacher Ujwala. Now I request Sir Sarvanand to give away the certificates. Sir Sarvanand. Thank you, Teacher Ujwala. Master Ankit Chaudhary. Master Ankit Chaudhary. Ankit has scored 80.6%. Next we have Miss Bhakti Bimaduri. Bhakti has scored 81%. Thank you, sir. Congratulations to all the toppers. Now I hand over to Teacher Ujwala. लाइव ना Heartiest congratulations to all the achievers present here. I, at this moment, feel proud to announce the names of all those who have passed their board exams with flying colors. So to begin with, I call upon Ms. Isha Fateh
who scored 81% at the board examinations. Miss Gitali, teacher with going to give away the prizes. The next I call upon Miss Sohani Nasnodkar, who scored 81.5%. Next, I call upon Miss Rani Padloskar, who scored 81%. Next, I call upon Miss Vandita Narvekar, who scored 81.66%. Thank you, teacher Gitali. I call upon Zahir Sheikh sir to give away the prizes to the students. Miss Diya Hadfadkar scored 82%. A big round of applause. Miss Rajeshri Parab, 82%. Next, I call upon Miss Isha Naik, 82.13%. She scored 83.33%. I call upon Miss Suhani Parab. She scored 83.33%. Thank you, Zahir sir. Now I request Sir Sharan Madgaonkar to hand over the prizes to the students. Master Sham Sawant scored 83%. Miss Sakshi, 83.66%. Master Karan Aital, 83.66%. Next, I call upon Miss Trisha Pendekar, 84%.
कितलो GB 128. Thank you, Sharan sir. Now I call upon teacher Sunanda Tingre to give away the prizes to the students. I call upon Master Deepraj Naik, who scored 84.66%.